अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड में कंफ्यूज हो चुके हो कि यार कहां इन्वेस्ट करें, या इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट फ्लैक्सी कैप फंड और एल्स लंबे समय के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इफ योर फर्स्ट टाइम हियर, आई एम अर्चित, एन इन्वेस्टर जस्ट लाइक यू। यहाँ हम बात करते हैं टूल्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज की दैट विल हेल्प अस टू लिव अ हेल्दियर एंड हैप्पियर फाइनेंशियल लाइफ। यार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इनकम लिमिटेड है, गोल्स बहुत सारे हैं फैमिली के अपने, प्लस इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, मगर उसमें रिसर्च करने के लिए समय नहीं है। टाइम इज अ कंस्ट्रेंट एज वेल एज मनी इज अ कंस्ट्रेंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और उनका आंसर आई वाज ट्राइंग टू सेट। अगर सारे क्वेश्चंस नहीं, एटलीस्ट फ्यू क्वेश्चंस इफ दैट कैन बी आंसर, and I am talking about that solution. Of course, I'm talking about a flexi cap fund. अच्छा, flexi cap fund या mutual fund is not the only answer to this problem. बहुत सारे आंसर्स हैं। आपके पास कोई ऑप्शन है, perfectly fine. Do mention in comment section what is the best option for you to achieve this with a specific goal. Flexi cap also comes with its own disadvantages. A fund manager might change or might not be the best fund manager for your return. Second, Flexi cap fund heavily invest in equity, by default volatility है. Third thing is expense ratio. Boss, I am looking for a high growth, but you are taking away a huge money from me in the form of expense ratio. That's also not a good idea. So बहुत सारे reasons हैं, इनमें से lot of reasons का, if not all, एक answer which is duration, अवधि, समय, कितने समय के लिए मैं लगा रहा हूँ. Now when you've understood the reasoning of me looking at Flexi Cap Fund, let's go ahead and start. हम जो key factors देखेंगे, we will discuss return based, we will discuss risk based parameters, we will check करेंगे. There are other key parameters like expense ratio and other things, and eventually fund manager के बारे में हम discuss करेंगे to find our best Flexi Cap Fund. Most important thing, data in this whole section, and the beauty of this framework that I've created is Sara data is available to you free. So I have not taken any such data in our whole framework, which is hidden, for which you have to pay, so you can freely use it. There are multiple locations through which you can use it. There is Value Research Online, there is Amphi, there is Morningstars, ET Money, and lot many. I am using Value Research. This is absolutely not a promotional video. I found that data useful. I am using it. You can use any other data whichever you wish to. The whole any other platform which you wish to. Sorry, data तो almost of course same रहेगा. Framework है, leverage that framework, use that framework, modify that framework, and get your best mutual fund so that you understand and you take your own decision. Flexi Cap Fund funds जहाँ पर अपन मेजरली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं. अराउंड 65% ऑफ मनी यू हैव टू इन्वेस्ट इन इक्विटी. व्हाट डज इट मीन? यू हैव रेस्ट ऑफ 35% which you can invest in debt fund, fixed income group funds or a different locations. Flexi Cap का सबसे बड़ा फायदा ये है where that 65% or maybe more you can divide between multi cap, small cap, large cap as per your choice, not your fund manager choice. Yeah. And when I'm talking about fund manager choice, the beauty is now you are not restricted to 25 like multi-caps. इसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे Flexi Cap फंड बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाले हैं. बहुत सारे फंड्स हैं, उसमें से निकाल के अपन ने 24 फंड्स लाए हैं. क्यों आए? देखो, वैल्यू रिसर्च का एक एस्पेक्ट जो मुझे समझ आता है, पसंद आता है, वहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया 5 रेटिंग, 4 रेटिंग, 3 रेटिंग, 2 रेटिंग टू डिफरेंट फंड्स. I found they are quite useful. But I'm not stopping there. So right now if you see, these are the funds which are all 5-star and 4-star rating. There are around 24 funds. अब यार 24 पे तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते. इसके आगे how will I filter it out? अगर इसमें ध्यान दो आप तो you will see all are not Flexi Cap funds as a name. So यहाँ हम बात कर रहे हैं Focus 30 fund, Retirement Saving Fund, Fund of Funds and the Flexi Cap funds. Why? I felt that all of these type of funds which you see right now, they are using the same psychology, same approach like Flexi Cap Fund. So there is no real sense for me to divide all of them separately.
Of course, there are different constraints, different policies. For an example, retirement saving fund, you have to have a 5-year lock-in period or the retirement period, whichever is earlier, so on. But I am looking at overall thesis क्या है यार, and thesis boss आप flexi cap की तरह ही investment कर रहे हो. Now, when I looked at these 24 funds, I found 7 funds have just 3 years period in the life. Their fund came just 3 years back. Does it mean it is wrong? No. But when I have those funds which are giving me greater returns and I'm looking at those and they are stable, why will I stick to a fund which is just 3-year-old? मेरे को अपने पैसे को स्टेबल रखना है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, तभी तो म्यूचुअल फंड में आ रहा हूँ. एंड देन व्हाट आई डिड, आई हैव आइडेंटिफाइड दोज फंड्स हु हैव कम एटलीस्ट 2 times इन टॉप 5, है ना. तो रिटर्न में हम बात करें, जेएम, फ्लेक्सी कैप, पराग, एचडीएफसी, दीज ऑल came at least 2 times in the top 5 with respect to the returns. So for an example, अब देखो last 10 years का कैगर जिसमें पराग पारेख is first, then JM Flexi Cap second, 360 Fund is third, fourth is मोतीलाल ओसवाल, fifth is Flexi Cap, HDFC Flexi Cap. दोस्त इसका मतलब है अगर आपने फर्स्ट जो था यानी कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, इफ यू वुड इन्वेस्टेड अराउंड 2000 rupees 10 years back SIP, तो 10 year कैगर पे यू वुड हैव इन्वेस्टेड अराउंड 2.4 लाख और आज के टाइम पे आपके पास होते हैं अराउंड 7-7.5 लाख. इसी तरीके से अगर आपने मान लो 10,000 रुपये लगाए होते पराग पारेख में, बिकॉज दिस इज ऑल्सो फर्स्ट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग पराग पारेख, योर 10,000 इन 7 years पीरियड, आपका रफली इन्वेस्टमेंट होता है लगभग 8 लाख और आपका रिटर्न टोटल आपका पोर्टफोलियो होता है 18 लाख. So this is the benefit of Flexi Cap long term period में, because what are you doing now? You are actually removing most of the volatility. जितना लंबा ड्यूरेशन as we discussed, उतनी कम volatility. अच्छा, इसमें नीचे आपको दिख रहा होगा ना BSE 500 TRI and Equity Flexi Cap. What is this benchmark? These are the benchmarks against which all the funds are compared. तो हम बोलते हैं कि यार ये बेंचमार्क का रिटर्न जो है ना 13.86 है, 13.88 for 10 years. But look at the returns of the top ones. 13% रिटर्न जहां बीएससी का टोटल रिटर्न इंडेक्स दे रहा है. टोटल रिटर्न इंडेक्स मतलब इसमें डिविडेंड रिटर्न भी है, इंटरेस्ट रिटर्न भी है एंड ऑफ कोर्स टोटल अपवर्ड रिटर्न भी है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 13.86 वर्सेस 18.42 का रिटर्न जो पराग पारेख दे रहा है, या फिर जेएम फ्लेक्सी कैप का जो 18.38 दे रहा है. इसी तरीके से अगर आप देखो तो 7 years का कंपैरिजन है, 5 years का है, 3 years का, 1 years का है. इवेंचुअली व्हाट आई सॉ, दिस फंड इफ यू लुक एट इट, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, इट्स गिविंग मी अ कंसिस्टेंट ग्रोथ. अभी 1 year का ऑफ कोर्स सब नहीं हाई दिया था और अभी अगर आप आज से देखोगे तो आपको अलग दिखेगा. व्हाई? बिकॉज बॉस अभी मार्केट गिर रहा है. देन आप यहां बात करते हो पराग पारेख का, तो पराग पारेख इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दे रहा है आपको. ऑफ कोर्स कंपेयरिंग टू दी जेएम फ्लेक्सी का कम दिया है. विल वी स्टॉप देयर? नो. रिटर्न इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट वी नीड टू लुक एट. एक डिफरेंस देख रहे हो? डिफरेंस ये देखो, मोतीलाल ओसवाल इट हैज गिवन मैक्सिमम रिटर्न इन 1 year, बट लुक एट द 10 year रिटर्न, लुक एट द 7 year रिटर्न, just 13.04, lower than the benchmark. Benchmark is 13.88 and it is giving me just 13.04 return. So I'm not going to go on a 1 year return, on a 3 year return. I need a long term return. इसको आप रोलिंग में देखना चाहो वो वाला रिटर्न ले सकते हो, मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ. देन वी कम टू द रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर के बारे में आपको बता चुका हूँ, यहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर्स एंड हाउ आई डिफाइन इट. यहाँ हम बात कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मार्केट से ऊपर नीचे ये कंपैरिजन में कितना जाता है. व्हाट वी लुक फॉर, यार बहुत ज़्यादा डेविएशन है यानी कि इनस्टेबिलिटी सी लग रही है, सो वी लुक फॉर लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन सो दैट हमारा अमाउंट, हमारा प्राइस थोड़ा स्टेबल रहे. उसके बाद आता है शार्प पे रेशो. शार्प पे रेशो मुझे हायर क्यों चाहिए? शार्प पे रेशो मुझे हायर चाहिए बिकॉज यार इवेंचुअली मैं अपना रिटर्न पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा चाहता हूँ, हैंस माई शार्प पे रेशो आई शुड टेक हायर. शार्प पे तो मुझे मिल गया रिस्क पर यूनिट पे रिटर्न हाई, बट व्हाट आई लुक फॉर, जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो सॉर्टिनो विल टेल मी कि बॉस यू आर नॉट गोइंग टू गो टू डाउन इन दिस फंड, वर्सेस जब ऊपर जा रहा हूँ दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गो हायर, हैंस आई लुक फॉर द हायर सॉर्टिनो रेशो. बीटा ऑफ कोर्स मुझे लोअर चाहिए यार इवेंचुअली बिकॉज आई एम कंपेयरिंग दिस विद माई ओन बेंचमार्क, दैट इज मेरा अपने कंपेरेटिवली इस फंड का कैसा रिलेशन चल रहा है. And alpha is going to tell me how the fund is outperforming in the market. यहाँ अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशंस में
Parag Parekh is standing first, HDFC Retirement is standing second, and HDFC Flexi Cap is standing third. और शार्पे में जो कि मुझे हायर चाहिए, JM Flexi Cap is higher, then we go to HDFC Flexi Cap again, then we look at the HDFC Retirement Fund. So HDFC's both funds are giving me higher ratio when it is Sharpe. But when I look at Sortino, what I see again, JM Flexi Cap is doing good job. Then we look at the HDFC Flexi Cap, which is second, HDFC Retirement, which is third. And eventually, normally higher the better, but over the one is also good for me. Beta is, when we look at the beta, that means it should be lower. When I look at it, Parag Parekh is 1. That means it is playing good in its own benchmark. And HDFC Retirement again is second. Now, अब बात आती है अल्फा की. Normally outperforming, I think more than 3 is good. And here I see most of them are more than 3. Wow. If you look at JM Flexi Cap, it is highly outperforming the market, 11. And then the ICICI Pru. And then the third one is Motilal Oswal. I think the HDFC Retirement, which was not giving me those great returns there, but it's really standing very tall when it comes to the risk factors. HDFC Flexi Cap is also coming well in the risk factors. Now, what are the other areas to take care of? We come to talk about churning ratio and expense ratio. Fund grade risk, fund risk grade and fund return grade. Yeah, fund risk grade and fund return grade I found useful in value search. Honestly, it is just a reflection for me. If my research is very much varying with the big research organizations. If you look at the churning ratio, JM Flexi is 119.56 churning ratio. Boss, कितना churn कर रहे हो? That means how much confidence you really have in your decision making. Of course, you're giving great returns, but churning is also very high. Churning is something from which I normally try to be away because limited churning that talks about stability in your decision making. And why I am investing in you? Because boss, I need decision making stability. Eventually, मैं भी जाके hit and trial करके return देख सकता हूँ. Then look at the HDFC Flexi Cap again. पीछे it was good, okay in return, it was okay in the risk, but churning is very high. Look at Motilal Oswal at 153, ICICI Prudential 89, 88, they're too heavy. Parag Parekh is looking good to me here. And HDFC Retirement again is very good to me. They're doing good job here, hence their stability, their decision making looks good. अच्छा देखो, HDFC Retirement is 14.55, HDFC Flexi Cap is 13.16. What it tells? Different fund manager might have the different decision making within the same mutual fund company. So expense ratio wise, I think the best sits as Bank of India Flexi Cap Fund. अच्छा पीछे बहुत ज़्यादा मेरे को उसके अंदर डिटेल में नहीं मिला very much differentiation, but here the expense ratio wise it stands tall. And then JM Flexi Cap, ICICI Pru, and then finally Parag Parekh. So now when I compare these, what I found, JM Flexi Cap is giving me good returns, but it's okay on the risk factor. Churning is extremely high for it. Parag Parekh, it is giving me good returns. It is giving me stable risk factors. It is giving me okay alpha, not as high as JM Flexi, but it's stable and its churning is also limited. Then we talk about HDFC Retirement Saving. Return was okay, risk wise very good, and churning is also good, and expense ratio is also okay in the top 5 eventually. Next comes the key factor for us, which is fund manager. He became fund manager in 2021. I don't know if this is the reason of high churning, because he's manager from last 3-4 years. Okay, not that bad. Parag Parekh, we are looking at boss up last 10 years से इसके fund manager हो, and that could be the reason that your decision making is getting better, improving. यहाँ अगर HDFC का retirement fund देखो तो they have joined 2016 में already. Shobhit was there, Srinivasan has just joined 2021. HDFC, ICICI Prudential, everyone joined very recently, specifically Darshal and Rohit has joined recently, Lalit was there for last 2 years, and so on. If you look at the AUM, you will find JM Flexi Cap Fund, which is giving great return for last 10-15 years, still have very small
AUM, अच्छा small होने का मतलब खराब नहीं है boss. As small the fund, as much they have power to play around. But look at the Parag Parekh with the higher AUM, rather highest AUM all of them, but still giving the great return. If I look at this whole gamut, where I look forward to, it is not a tip. I would like to keep safe. I'm not saying any of the fund is wrong. As I said, this is an example, and in this example, if I see, I will select the Parag Parekh for myself. तो what I found, एक तो रिटर्न्स अच्छा है, स्टेबिलिटी है, एंड फाइनली रिस्क फैक्टर के साथ साथ एक्सपेंस रेशियो कम है, एंड चर्निंग कम है. यू नीड टू डू योर ओन एनालिसिस. Use this framework. Let me know in the comment section which one is best one for you. If you need any help from this framework perspective, do mention in the comment section and I will respond to you for sure. Thank you very much for watching this video, and if you like this video, please click on the like button, share the video and subscribe if you haven't subscribed. Thank you.